State Police Morale strengthened the launch of WIC 112 integrated helpline to make Gujarat emergency services stronger and effective. MOS Home Harsh Shanjavi Gujarat implements Amit Shah Western's Zonal Council suggestion integrates all emergency services under one roof in just 6 months. Union Home Minister Shri Amit Shah launches security projects, inaugurates police housing from Gandhinagar, presence of Chief Minister Shri Bhupendra Patel and Minister of State Home Shri Harsh Sanghavi. The state government also has adopted an innovative approach to ensure that citizens receive assistance at the scene of criminal crime incident and accident, other emergencies through the use of modern technology. In line with the directives of the Union Ministry of Home Affairs, Union Home and Corporation Minister, Member of Parliament from Gandhinagar, Amit Shah, along with Chief Minister Shri Bhupendra Patel and Minister of State of Home Shri Harsh Sanghavi, inaugurated several safety and security projects in Gandhinagar today. As a part of this initiative, the Dial 112 Jan Rakshak project was launched, which includes a state-of-the-art call center and the development of 500 Jan Raksha van. Additionally, under the Police Mobility Improvements Program, 534 new Bolero was flagged off by the police service. On the occasion, vehicle keys were symbolically handed over to the police drivers by dignitaries. Dial 112 जनरक्षक प्रोजेक्ट नवनिर्मित मकानों तथा पोलीस वाहनों लोकार्पण कार्यक्रम में अपनी सौनी साथे मंच पर उपस्थित माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह साहेब, मारा साथी मंत्री श्री हर्ष भाई संघवी, गांधीनगर महानगरपालिका मेयर श्रीमती मीराबेन पटेल, मारा साथी धारासभ्य श्री रीटाबेन पटेल, श्री लक्ष्मणजी ठाकुर, श्री अल्पेश भाई ठाकुर, श्री जे.एस. पटेल, श्री बलराज सिंह चौहान, गृह विभागना अधिक मुख्य सचिव श्री एम.के. दास, राज्यना मुख्य पोलीस अधिकारी श्री विकास सहाय, गृह विभागना प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीमती निपुणा तोरवणेजी, ईएमआरआई ना डायरेक्टर श्री के कृष्णम राजू, आमंत्रित सर्वे महानुभावों, प्रेस मीडिया मित्रों, सौने मारा नमस्कार। विश्व नेता ने यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदी ने प्रेरणा थी आ वर्षे सरदार साहेबनी 150મી जन्म जयंती देशभर में उजवाई रही है। अखंड भारतना शिल्पी, गुजरातना पनोता पुत्र, लोह पुरुष और स्वतंत्र भारतना प्रथम गृहमंत्री एवं श्री सरदार वल्लभभाई पटेल देशनु गौरव है। अपना सौ माटे बीजू पण एक गौरव ए छे कि अपना कर्मठ गृह और प्रथम सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह साहेबे देशना सौथी लांबा समयना गृहमंत्री तरीकेनो कीर्तिमान प्रस्थापित कर्यो छे। समग्र गुजरातनी जनता वती श्री अमित भाई शाह साहेब ने आ सिद्धि माटे खूब खूब अभिनंदन पाठवुं छुं। आदरणीय श्री शाह साहेबना नेतृत्वमां देश आंतरिक सुरक्षा खूब मजबूत बनी है और समय अनुकूल तथा भारतना पोताना कही शकाय तेवा नवा कायदा भारतीय न्याय संहिता पण देशने मळ्या छे। ताजेतरमां सांसदना सत्रमां 130मो संवैधानिक सुधारो श्री अमित भाईए सूचवीने देशनी राजनीति में नैतिकता और ईमानदारी लाववानुं ऐतिहासिक पगलू मोदी साहेबना दिशा दर्शन में भर्यु छे। राजनीति में के शासन व्यवस्था में पारदर्शिता लाववानी बात होय के देशनी आंतरिक सुरक्षा ने सर्वोच्च राखीने नक्सलवाद ने समाप्त करवानी बात होय, आदरणीय श्री अमित भाईए हमेशा नेशन फर्स्टनी भावनाथी सरदार साहेबना पगले चालीने देशने मजबूत करवामां खूब महत्वनी भूमिका भजवी छे। राष्ट्र प्रथमना ध्येय साथे राष्ट्र और राज्यना विकासने पण मोदी साहेबना शासનમાં प्रायोरिटी अपाई छे। वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीए विकसावेली आ विकासनी राजनीति हमणां 2 દિવસ पहला ज आपणे जोयुं छे के जे विपक्ष अने इंडी गठबंधने एक पची नथी, परिवारवादने ज पोषनार आवा लोको साव बोखलाई गया छे। एवा लोको एटला हताश थई गया छे के
રાષ્ટ્રહિત પ્રથમના સ્થાને રાખી 140 કરોડ ભારતવાસીઓની સેવામાં સમર્પિત મોદી સાહેબ અને તેમના સ્વર્ગસ્થ માતા માટે હલકી કક્ષાની ભાષાના નારા બિહારમાં ઇન્ડી ગઠબંધનની સભામાં મંચ પરથી લગાવવામાં આવ્યા છે. આ લોકો સ્પષ્ટ સમજી લે કે મોદી સાહેબ અને એમના સ્વર્ગસ્થ માતાના અપમાન માટે દેશ એમને ક્યારેય માફ નહીં કરે. શ્રી મોદી સાહેબે શક્તિ પંચામૃતના આધારે ગુજરાતમાં વિકાસની ઇમારત રચી